हेलो पिला माने आजिर क्लास सहित चैनल को समस्त को स्वागत। जेटी 2023 पे आजिर क्लास टी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आज आम इंग्लिश पेडागोजी रु केते गुडी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। आपण जदि जेटी 2023 रे 100% क्वालिफाई करिबा पई चाहुछंती तेबे आजिर क्लास टी को संपूर्ण भाबे देखि नियंतु। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर क्लास। आजिर प्रथम प्रश्नटी हेउछि Which of the following is not a language component? Which of the following is not a language component? Option A sound, option B symbols, option C vocabulary, option D structures. तो पिला माने करेक्ट आंसर कौन हेबो? ऑप्शन ए साउंड। साउंड इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a characteristic of a language? Which of the following is not a characteristic of a language? Option A vital part of growth process. Option B has it is own set of grammatical rules. Option C it is productive and creative. Option D it is spontaneous not a result of evolution. तो करेक्ट आंसर कौन है पिला माने? राइट आंसर ऑप्शन डी इट इज स्पॉन्टेनियस नॉट ए रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड इन क्लास 2 will initially learn the language in the most effective manner through which one of the given method? Option A playway method, option B practice and drill, option C imitation, option D all of the above. तो राइट आंसर कौन है पिला माने? ऑप्शन डी all of the above. वेरी गुड पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most effective teaching method in a language class? Which is the most effective teaching method in a language class? Option A laying too much emphasis on correct pronunciation. Option B reading out letters and essays from a book. Option C emphasis on reading with correct intonation and speed. Option D discussing a topic or idea of learners interest using simple vocabulary. तो करेक्ट आंसर कौन है पिला माने? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डिस्कसिंग ए टॉपिक और आइडिया ऑफ लर्नर्स इंटरेस्ट यूजिंग सिंपल vocabulary इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड इन ए लैंग्वेज क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is no longer a position of English language in India? Which is no longer a position of English language in India? Option A link language, option B associate official language, option C global language, option D foreign language. तो करेक्ट आंसर कौन है पिला माने? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फॉरेन लैंग्वेज। ऑप्शन डी फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not the principle of teaching English? Which is not the principle of teaching English? Option A learning by doing, option B reading books, option C seeing the objects in real, option D creating interest. तो करेक्ट आंसर कौन है पिला माने? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी seeing the objects in real is not the principle of teaching English. Next question, micro teaching is a technique used by teacher educator when trainees, option A watch a live demonstration, option B watch an audio visual presentation, option C received individualized programmed instruction, option D use the simulation technique to develop their skills. तो करेक्ट आंसर कौन है पिला माने? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी
Option D. Use the simulation technique to develop their skills. Next question. In a language learning class, meaningful environment can be created by. In a language learning class, meaningful environment can be created by. Option A. Fun activities. Option B. Dramatization. Option C. Storytelling. Option D. All of the above. The correct answer कौन है पिला माने? Option D. All of the above. Next question. A teacher is training his her learners in public speaking and debate. Which of the following characteristic the teacher cannot expect to develop? Option A. Concept. Option B. Control over emotions. Option C. Using language creativity. Option D. Voice modulation. तो पिला माने करेक्ट आंसर कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कंट्रोल ओवर इमोशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is the following situations would be the best for maximum transfer of learning? Which is the following situations would be the best for maximum transfer of learning? Option A. Different tasks requiring different response. Option B. Different tasks requiring same response. Option C. Similar tasks requiring different response. Option D. Similar tasks requiring same response. तो पिला माने राइट आंसर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सिमिलर टास्क्स रिक्वायरिंग सेम रेस्पॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्रू व्हिच मेंटल एक्टिविटी डू वी ट्रांसफॉर्म अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू रीच कंक्लूजन? थ्रू व्हिच मेंटल एक्टिविटी डू वी ट्रांसफॉर्म अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू रीच कंक्लूजन? ऑप्शन ए मोटिवेशन. ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग. ऑप्शन सी रीजनिंग. ऑप्शन डी थिंकिंग. तो करेक्ट आंसर कौन है पिला माने? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रीजनिंग. रीजनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए स्टूडेंट आस्क्स ए टीचर ए क्वेश्चन इन द क्लास, व्हाट वुड द टीचर डू? ऑप्शन ए advise to meet after the class. Option B. Encourage to participate in the discussion in the class. Option C. Encourage to ask more questions. Option D. Encourage to search answer independently. तो करेक्ट आंसर कौन है वो पिला माने? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, encourage to participate in the discussion in the class. Next question. As a language teacher, you want to ensure participation of more students in class. Which of the following methods of teaching would you adopt? Option A. Demonstration. Option B. Discussion. Option C. Recitation. Option D. Role play. तो पिला माने करेक्ट आंसर कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डेमोन्स्ट्रेशन. Next question. Knowledge of more than one language. Knowledge of more than one language. Option A becomes a burden to the teacher in language classroom. Option B confuse the learners while learning a new language. Option C is very helpful in teaching and learning a new language. Option D cause interference in learning a न्यू लैंग्वेज. तो पिला माने राइट आंसर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, इज वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज. नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज इज वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए टीचर एंगेज हेयर लर्नर्स इन ए फन एक्टिविटी बिफोर बिगिनिंग ए न्यू लेसन. The purpose of this activity is to, option A, discipline the learners before the lesson. Option B, divert the attention of the learners. Option C, reduce the workload of the teacher. Option D, motivate and
energies the learners। तो पिला माने करेक्ट आंसर कौन हेबो ऑप्शन डी motivate and energies the learners। Next question, a learner's competency in English will improve when she or he receives dash of learning experience that is appropriate। Option A slightly easier lower level, option B an equal level, option C a slightly higher level, option D a range of levels। तो पिला माने करेक्ट आंसर कौन हेबो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी a slightly higher level। Next question, a 12-year-old child enjoys using spoons। This enjoyment indicate that she has option A meta-linguistic awareness, option B semantic slanting, option C deductive reasoning, option D mental blocks। तो पिला माने करेक्ट आंसर कौन हेबो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए meta-linguistic awareness। Next question, which of the following resource will help to break down communication barriers and enable children to study and learn in both language 1 and language 2? Option A multilingual, option B multimedia, option C more textual, option D communicative। तो राइट आंसर कौन हेबो पिला माने राइट आंसर ऑप्शन ए multilingual। Next question, some criteria for the selection of language items should involve dash। Some criteria for the selection of language items should involve dash। Option A enough worksheet for practice, option B everyday vocabulary and sentence, option C their learn ability coverage and teach ability, option D a focus on language rules। तो पिला माने करेक्ट आंसर कौन हेबो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी their learn ability coverage and teach ability। Next question, while teaching language to learners a teacher should teach। While teaching language to learners a teacher should teach, option A in an integrated manner, option B by giving instructions, option C through imitation, option D in isolation। तो पिला माने करेक्ट आंसर कौन हेबो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी by giving instruction। While teaching language to learners a teacher should teach by giving instructions। आपण जदि ओटीटी सीटी बीएड जेटी भली परीक्षा पई प्रिपरेशन करूछंती तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा द्वारा आपण समस्त प्रकार परीक्षा पई नुआ नुआ क्लास पाई परिबे। परीक्षा पई नोट्स मटेरियल्स व मॉक टेस्ट पाइबा पई हमर व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल रे शीघ्र जॉइन हुवंतु। एहार लिंक डिस्क्रिप्शन रे दिया जाइछि। एही परी क्लास रे जॉइन हुवंतु व सफलता मध्य पांतु। रहुछि धन्यवाद।